Good morning, class. Welcome back to a new session. I hope you all are fit and fine. So today, beta ji, we are going to discuss mitochondria. As we all know that mitochondria is known as powerhouse of a cell. Mitochondria. Okay, as we all know that it is also known as power house of a cell. Okay, so beta ji, before starting this topic, I just want you all to subscribe my channel and do hit the bell icon to get the latest notification. Okay, now let's talk about the discovery of mitochondria. तो किसने किसने अपना योगदान दिया माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी में, वो सारे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, तो पहले जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था जानते हो? कॉलिकर. कॉलिकर was the who observed the mitochondria first. Okay, तो कॉलिकर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया. इन्होंने पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व्ड किया था. किसमें? मसल सेल्स में. इन मसल्स सेल्स ऑफ इंसेक्ट के मसल सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को. और उस वक्त कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था. उस वक्त इसको क्या नाम मिला था बेटा जी? उस वक्त इसको नाम सार्कोसोम्स मिला था. एंड वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम्स एट दैट टाइम. सार्कोसोम्स in the year 1857. In the year 1857, Koliker first observed the mitochondria in the muscle cell of insect and he called it sarcosomes in 1857. Okay, then next scientist फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया था? फ्लेमिंग called it फीलिया. इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फीलिया कहा. ओके, फ्लेमिंग called it फीलिया. देन अ थर्ड साइंटिस्ट Altman called it bioplast. Okay, Altman called it what? Bioplast. Now, then the fourth scientist, Benda, and he called mitochondria. Okay, he has given the name mitochondria. Benda called it mitochondria. So the name mitochondria was given by whom? Benda. Okay, Benda in the year 1898. 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया और ये नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया, इस साइंटिस्ट ने दिया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द occurrence. So as we all know that beta ji, mitochondria is a double membrane bounded organelle
And we all know that double membrane bounded organelle are only present in eukaryotic cell. These double membrane bounded organelle are absent in prokaryotic cell. So mitochondria present in all eukaryotic cell. Okay, and there is one exception. It is absent in mature RBC of mammal. This mitochondria is absent in mature RBC of mammal, except mature RBC of mammal. RBC means red blood corpuscles. रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मैमल के रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता. ओके, मैच्योर आरबीसी में, मैमल के मैच्योर आरबीसी में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर. So beta G, as we all know that mitochondria is known as powerhouse of the cell. So जो भी सेल जो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होंगे उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट प्रेजेंट होगा. तो आप ये बात एकदम क्लियर रखिए, जो सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट नंबर जो है वो ज्यादा होंगे. सो इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल and their requirement. Okay, so let's talk about the few examples. Let's talk about the examples, and we take first one. Let's talk about the plant cell. Plant cell में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? Each plant cell contain 500 to 1000 per cell mitochondria. Means 500 to 1000 mitochondria एक सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एग्जाम्पल. लीवर सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है पर सेल में? 1000 to 1600 पर सेल. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, sperm. So beta G, each sperm cell contain 20 to 24 mitochondria per cell. 20 to 24 mitochondria per cell. Okay, so the number varies greatly. Okay, so now let's talk about the size. So length of mitochondria is 2 to 10 mu, and breadth of mitochondria is 0.5 to 1 mu. Okay, structure of mitochondria. So this one is the outer membrane of the mitochondria. So let's write outer membrane of mitochondria. Okay, and this one is the inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. Now let's write inner membrane. Okay, inner membrane. And this foldings are known as
this enfoldings, okay, enfoldings is known as what? Cristae. Okay, and the space between these two membrane is known as perimitochondrial space or intermitochondrial space. And this inner foldings consist of oxysomes. इस इनर फोल्डिंग्स में ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे और ये ऑक्सीजोम्स जो है ये सारे जगह सारे इनर फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, मतलब इनर फोल्डिंग में प्रेजेंट होगा. मैं नहीं बना रही हूँ, आप सब इस तरह से बना लीजिएगा. ओके, ये सभी जगह होगा. एंड व्हाट दिस नोन एज ऑक्सीजोम्स. Okay, and this inner folding consists of a ground substance, and this ground substance is known as what? This ground substance is known as mitochondrial matrix. And this inner folding consist of free ribosomes. इसमें क्या होगा? इसमें free ribosomes भी होते हैं. Okay, so write free ribosomes. And this, as we all know, that they are the two organelle that has its own circular DNA. तो first one is mitochondria and the second one is plastid. Okay, तो mitochondria has its own circular DNA. Has its own circular DNA, and this DNA is known as chondriogene. या इसको सर्कुलर डीएनए भी आप कह सकते हो, कॉन्ड्रियोजीन और सर्कुलर डीएनए. As we all know that mitochondria is a double membrane bounded organelle, and each membrane is 60 to 70. Each membrane is 60 to 70 angstrom thick. And these membrane is composed of what? Each membrane is composed of lipoprotein. Lipoprotein. As we all know that lipoprotein is a combination of lipid plus protein. Okay, and the outer membrane is smooth. और इसमें जो outer membrane होता है वो smooth होता है. Okay, and this outer membrane is smooth as well as more permeable and with less protein contents. इसमें protein contents कम होगा और ये more permeable है. Okay, smooth है, smooth के साथ साथ more permeable है, and this one is less permeable. Inner foldings is known as is less permeable, and this has more protein content. Inner folding has more protein content. Okay, and this inner foldings is also known as what? Cristae. As we all know that inner folding is known as cristae. Crista is a singular one. Crista may be branched or unbranched. आपको जैसा दिख रहा है, may be branched और unbranched. ये branch भी हो सकते हैं और unbranched भी हो सकते हैं. ये finger like projection के जैसा आपको दिख रहा है, ये finger like projection के जैसा है. Okay, and this detailed structure of oxysome is like this. Okay, detailed structure of oxysome is like this. This head particle is known as what? This head particle is known as what? F1 particle, F1 subunit. And this one is known as stack.
The base is known as F0 subunit. Okay. So this one is the structure of mitochondria. I hope आपको समझ में आया होगा. और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. माइटोकॉन्ड्रिया इज known as semi autonomous organelle. Why it is known as semi-autonomous organelle? Because it has independent synthesis of protein. Independent synthesis of protein and self-replication. So the self-replication, that's why it is known as semi-autonomous organelle. It is capable of independent synthesis of its protein. अपने प्रोटीन को synthesis कर सकता है, self replication कर सकता है, जिसके वजह से इसे क्या कहा गया है? Semi autonomous organelle. Okay, तो let's talk about the function. So its major function is to provide production. Okay, its main function of mitochondria is production. क्या है? पहला production. The main function of mitochondria is production, storage, and supply of energy. In the cell. Supply of energy in the cell. Okay. And the next function is, other function is, it plays important role in heat production. Okay. ये अहम रोल क्या इस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है हीट प्रोडक्शन में. It helps in heat production. Okay. Mitochondria, one more function of mitochondria is mitochondria participate in respiration. माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है बेटा जी. ये हम लोग डिटेल में ग्रेड 10 में पढ़ेंगे. ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो ये दो वेज में रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है. पहला जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, एंड द सेकेंड वन इज Krebs cycle. That's all. Thank you.